Hello students, today we will discuss about the anatomy of lacrimal apparatus. Now this is very important question for your university exam. So we will just discuss about what are the components of this lacrimal apparatus. देखिए इस lacrimal apparatus का काम क्या है? जब भी आप ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि when you have the eye drops in your eye, sometimes you are able to feel the taste of that drug. तो वो जो आई ड्रॉप है जो हम आंख में डालते हैं वो ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में आती है एंड यू आर एबल टू फील द टेस्ट ऑफ दैट आई ड्रॉप. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जनरली यू हैव द लैक्राइमल एपरेटस जो हमारी इन आईज के अंदर काम कर रहा है एंड इट इज 24 आवर्स इज वर्किंग टू ड्रेन योर टीयर्स और द सिक्रीशंस ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड. ठीक है. सो टुडे विल डिस्कस दैट हाउ दिस ड्रेनेज विल टेक प्लेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ड्रेनेज सिस्टम. सो lacrimal apparatus responsible for the production, for the movement and for the drainage of lacrimal fluid or tear from the surface of eyeball. तो जो eyeball की surface है, इस eyeball की surface पे आपका जो लैक्राइमल फ्लूइड है, इस लैक्राइमल फ्लूइड के प्रोडक्शन के लिए, इस लैक्राइमल फ्लूइड के आईबॉल के ऊपर मूवमेंट के लिए और उस फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लैक्राइमल एपरेटस. नाउ दिस लैक्राइमल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट. वन इज द लैक्राइमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट, सेकेंड इज लैक्राइमल कैनालिक्यूली, lacrimal sac and nasolacrimal duct. Now here if you will see, this is actually the duct that will take the secretions into the nasal cavity from the lacrimal area. That's why it is known as nasolacrimal duct. Now the another important thing is that this lacrimal apparatus is ectodermal in origin. This is the question of your exam. Clear? Now the next thing is that when you will see the orientation of lacrimal apparatus, how it is located. So now see this is the eye of my left side. Clear? So this is the nose, this is the left side of the eye. So on the left side, if you will see this left side of lacrimal apparatus, this is your lacrimal gland. Now this lacrimal gland is having the ducts. Now these ducts will open into the conjunctival fornix. Now what is conjunctival fornix? Conjunctival fornix means the reflection of conjunctiva from your eyelid to the eyeball. ठीक है. तो ये आपका अपर आईलिड है. इस अपर आईलिड के अंदर you have this is the upper eyelid, this is the lower eyelid. और अपर आईलिड और लोअर आईलिड के अंदर की तरफ इनर साइड में जो कंजक्टाइवा है, दिस कंजक्टाइवा इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस eyeball at one point and this point of reflection is known as superior and inferior conjunctival fornix. So this is the superior conjunctival fornix, this is the inferior conjunctival fornix. So these ducts will open into the superior conjunctival fornix, that means here, but in the lateral part. And whatever the fluid is coming from the lacrimal gland, it will reach to these fornix on the medial side of your eye. Now at the medial angle of the eye, you have the two small foramens which are known as puncta, that is known as puncta, superior and inferior puncta. From the puncta we have a deep connection. This connection is known as canaliculi. These connections are known as a very fine capillary canals, that's why they are known as canaliculi. And these canaliculi join to form a common canal and it ultimately open into a sac. That sac is known as lacrimal sac and this sac drained downwards by a duct is known as nasolacrimal duct. So ultimately the secretion will reach to your nasal cavity. So when you will see this system, this whole system including the gland, its duct, your puncta, canaliculi, lacrimal sac and nasolacrimal duct is known as lacrimal apparatus. Clear? Now when you will see the section, when you will take the section of your eyelid, now this is the important thing that this section is not from the center. Now if you will see this diagram, if I will take the section here or if I will take the section on the lateral side,
The difference is that this lacrimal gland is present on the superolateral aspect of your eyelid. क्लियर? सो ये जो मेरा अपर आईलिड है, इस अपर आईलिड के रिलेशन में लैक्राइमल ग्लैंड मिड में नहीं है. यू कैन सी दैट इट इज नॉट नियर द मिड, इट इज इन द लैटरल साइड ऑफ द आई. सो ये जो लैटरल एंगल है, इस लैटरल एंगल के ऊपर यहां पे इफ आई विल टेक द सेक्शन, देन ओनली यू आर एबल टू अप्रिशिएट द lacrimal gland. Now this is the lacrimal gland which you are able to appreciate. So if you are able to see any kind of the section where you are able to appreciate the lacrimal gland, you always keep this thing in mind that this section is always near the lateral angle of your eye. Clear? So यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को अगर हमें देखना है, इफ यू वांट टू सी, देन द सेक्शन ऑफ दिस type of the section should be on the lateral part of your eye, not in the center, because lacrimal gland plays laterally. Clear? So यहाँ पे this is the one thing. Now इसके क्या structure है, that we will discuss in the coming slide. So what is lacrimal gland actually? So lacrimal gland lies in the anterior part of superolateral region of the orbit. Now I just told you that ये orbit मतलब these bony areas, जो बोनी ऑर्बिट होता है जिससे हमारा बोनी फ्रेमवर्क बना है, इस बोनी फ्रेमवर्क में along the superior border, but in the superior border where medially or laterally? Laterally. I just told you. So this is superior and laterally. So that's why this word comes that it present along the superolateral aspect of the orbit. So this is again the question of your MCQ. Then the gland is divided into the two parts. Now this is again the important point which you have to remember, that what are the parts of lacrimal gland. So lacrimal gland is divided into the two parts, orbital part and palpebral part. But how? It is divided by a muscle aponeurosis that is known as levator palpebri aponeurosis. ठीक है, मसल का नाम क्या है? levator palpebri superioris aponeurosis. Now here you can see that this is the eye of my right side. Now in this right side eye, this is the superior border and this is the lateral aspect. So you have the gland on the superolateral aspect. So this is the gland on the superolateral aspect. But now you can see that this is the aponeurosis. Now what is this aponeurosis? This is the aponeurosis of the muscle is levator palpebri. अब आप ये देखिए कि ये जो मसल है, ये मसल सेंटर से आ रही है और आने के बाद इस तरह से ब्रॉड हो गई है. क्लियर? नाउ इट कैन बी ऑफ टू पैटर्न ऑफ द एपोन्यूरोसिस, कि एक तो ये नैरो टेंडन है जो आके यहाँ ब्रॉड हो गया है. द सेकंड पैटर्न कैन बी दैट द होल मसल कैन फॉर्म दिस ब्रॉड aponeurosis, but it is not like that, it is like that. Now here you can appreciate that this is the narrow part of the tendon and this narrow part of the tendon is coming out and then it will broaden. Clear? So ये जो broadening हुई, ये broadening इस narrow tendon से हुई. So इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी gland थी, जो एक complete gland थी, उस कंप्लीट ग्लैंड के अंदर ये जो प्रोजेक्शन है ये आगे से एंटर हो गया. ठीक है, अगर ये इस तरीके का पैटर्न होता तो ये फिर इस पूरे एरिया में यहां से टेंडन आ रहा होता, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू पेनिट्रेट द ग्लैंड फ्रॉम एंटीरियर साइड. क्लियर? सो अभी आप जब इस पीछे डायग्राम को देखते हैं तो यू कैन सी दैट दिस इज द टेंडन एंड दिस टेंडन इज ऑफ levator palpebri superioris muscle, and that's why this tendon is able to penetrate this gland from anterior side, so the gland is remain connected on the posterior part. ठीक है, so ये जो tendon था ये इस तरीके का था. Clear? And this is the shape of the tendon, and when this lateral part is extending, it is actually penetrating this gland in the from anterior aspect. So जब आप इसको काट के देखते हैं तो you are able to appreciate कि this aponeurosis is dividing the gland into the two part. Upper part is known as orbital part and lower part is known as palpebral part of the lacrimal gland. Clear? So this is the line which you should always keep in mind when you are writing the question on the lacrimal apparatus. Now orbital part. Now orbital part is larger
and it lies within the shallow lacrimal fossa. Where it lies? It lies in the shallow lacrimal fossa. अब ये जो lacrimal fossa है, this is a bony feature. Lacrimal fossa क्या है? It is a bony feature, and this lacrimal fossa present on the inner aspect or the medial aspect of the zygomatic process of frontal bone. So frontal bone का जो zygomatic process है, so this is the frontal bone. On the lateral side you have this zygomatic process of frontal bone. इस zygomatic process of frontal bone के medially means यहाँ अंदर की तरफ you have the lacrimal fossa just within the upper lateral aspect of the orbital margin. ठीक है? So if you will see this diagram, now this is your frontal bone and this part is known as zygomatic process of your frontal bone, because this bone is zygomatic bone. So this part is going to make a suture or joint with the zygomatic bone. So ये वाला जो नीचे प्रोजेक्शन आ रहा है किसका? फ्रंटल बोन का. ये प्रोजेक्शन फ्रंटल बोन का प्रोजेक्शन क्या कहलाया? द प्रोसेस which is making a joint with the zygomatic bone. That's why this process is known as zygomatic process of frontal bone. Clear? So ये जो zygomatic process of frontal bone है, इसके अंदर की तरफ यहां पे अंदर की तरफ दोनों साइड क्या होता है? एक डिप्रेशन, एंड दैट डिप्रेशन इज फॉर लैक्राइमल ग्लैंड. दैट डिप्रेशन इज फॉर लैक्राइमल ग्लैंड. सो यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो किस बोन के अंदर है? आंसर इज फ्रंटल बोन, नॉट zygomatic bone. द पार्ट इज नोन एज zygomatic process of frontal bone. So you will have the zygomatic process. So zygomatic process comes on the lateral side. So this zygomatic process of frontal bone on the inner side is having a depression for the lacrimal gland, and this orbital part lies above the levator palpebrae superioris. So here you can see that this is the muscle, and this muscle is levator palpebrae superioris, and above this, now you can see that this portion is above the muscle aponeurosis. So this portion is the orbital portion. Now where is the palpebral part? I told you that the palpebral part and the orbital part are remain connected from the posterior side, and the palpebral part is smaller, which is almost 1/3 of the whole gland, and it lies below. It lies below the levator palpebrae aponeurosis, while orbital part kahan tha? It lies above. Clear? So here you can see that this portion which is in the lower area is your area is known as palpebral part of lacrimal gland. Clear? And it is continuous with the posterior part. Now this is again the question of your exam, that the connection of orbital and palpebral part is in front or posteriorly. Answer is posteriorly. Why? Because I just told you that this tendon penetrate the gland from anterior aspect, so posteriorly the continuation is present. ठीक है? And the important thing is that this part extend into the lateral aspect of upper eyelid. So ये जो हमारा palpebral part है ये upper eyelid में present है, और हम इसको देख सकते हैं by this lifting of your upper eyelid on the lateral side. Now here we have seen the position. Now what is about the secretion from the lacrimal gland? So lacrimal gland secretions are watery. That means the lacrimal gland is serous gland, and the function of this fluid is to keep the cornea moist, to nourish the cornea. It contains the several proteins like immunoglobulins, and these immunoglobulins are bactericidal, so it prevents the infection. Then it maintains the ocular surface epithelial integrity, because it keeps this surface moist and prevent the drying, and if there is a dryness then there is a discontinuity of epithelium may occur. So for the continuity of the epithelium this tear is responsible. So कई बार आपसे पूछा जाता है what are the functions of the lacrimal fluid or the tear. Now the entire gland is having 12 to 15 ducts. अभी अभी हमने देखा कि जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, और ये जो दो पार्ट हमारे डिवाइड हुए इनके बीच में क्या है? इनके बीच में है आपका एपोन्यूरोसिस, और ये जो एंटीरियर पार्ट है ये बड़ा होता है,
posterior or the lower part छोटा होता है, this upper part is having the ducts and this lower part is having the ducts. ठीक है, और ये जो ducts हैं ये कितनी होती हैं? These ducts are 12 to 15 in number और ये open कहाँ होती हैं? They will open into the superior conjunctival fornix. Clear? The fluid move across the surface of eyeball from lateral to medial side. ठीक है, हमारा secretion कहाँ आ रहा है? Lateral side में. क्यों? Because gland किधर है? You have the location of gland on the lateral side. So when you are blinking the eye, this fluid is moving from lateral to medial side. Clear? So the movement is from lateral to medial side, and what is the reason of the movement? Is the movement of your eyelid, that is the Orbicularis Oculi muscle. Now, if you will see that there is a question that why the excision of palpebral part is functionally equivalent to the total removal of gland. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अगर मैं सिर्फ ग्लैंड का लोअर पोर्शन, दैट मीन्स द पाल्पेब्रल पार्ट है, अगर इस पाल्पेब्रल पार्ट को निकाल दूं तो इट इज एज गुड एज रिमूवल ऑफ द होल लैक्राइमल ग्लैंड. व्हाई? ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट इफ आई विल रिमूव द लोअर पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ग्लैंड, देन व्हाई इट इज इक्वलेंट टू द रिमूवल ऑफ होल ग्लैंड. ठीक है, देखो उसका बेसिक रीजन ये है कि जब भी आप इस ग्लैंड को देखते हैं तो यहां पे जो डक्ट्स हैं, ये डक्ट इस इंफीरियर पार्ट से होती हुई किस में ओपन हो रही हैं? आपके सुपीरियर फॉर्निक्स में हो रही है. ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज योर ऑर्बिटल पार्ट. इस ऑर्बिटल पार्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं, दे विल फर्स्ट पियर्स दिस एपोन्यूरोसिस, देन दे विल पास थ्रू दिस लोअर पोर्शन एंड देन दे विल ओपन हेयर. ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी डक्ट को आपके सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स में ओपन करना है तो अल्टीमेटली उनको किसको पियर्स करना पड़ेगा? एपोन्यूरोसिस और योर लोअर पोर्शन. अब मैंने इस लोअर पोर्शन को रिमूव कर दिया. इफ आई विल रिमूव दिस लोअर पोर्शन, एक्चुअली मैंने क्या कट कर दी? मैंने सारी डक्ट्स कट कर दी, चाहे वो ऑर्बिटल पार्ट से आ रही थी, चाहे वो पाल्पेब्रल पार्ट से आ रही थी. ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑर्बिटल पार्ट जो है, इससे कोई भी डक्ट इस तरह से डायरेक्टली हमारे कंजक्टाइवल सैक में ओपन नहीं होती हैं. जो भी डक्ट्स हैं, these ducts always reach to this superior conjunctival fornix by passing through this lower portion only. ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये चीज लिखी हुई है जो आपका सवाल है, that the ducts from orbital part penetrate the aponeurosis and they join the ducts of palpebral part. So this is the first line. Second thing is that later on all the ducts passes through the palpebral part to open into the conjunctival fornix. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपने पाल्पेब्रल पार्ट को रिमूव कर दिया, इफ यू कट दिस पाल्पेब्रल पार्ट, तो आपने इस पाल्पेब्रल पार्ट की अपनी डक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो डक्ट ऑर्बिटल पार्ट से होती हुई, पाल्पेब्रल पार्ट से होती हुई कंजक्टाइवा के फॉर्निक्स में ओपन होने वाली थी, आपने उन डक्ट्स को भी कट कर दिया. सो दिस इज द क्वेश्चन that why the removal of palpebral part is as good as the removal of whole gland. Now there are few another important features जो हमें आई के अंदर दिखते हैं. वो फीचर्स क्या क्या हैं? What is plica semilunaris, what is lacrimal caruncle, what is lacus lacrimalis, what is lacrimal canaliculi and lacrimal puncta. ठीक है, अब plica semilunaris क्या होता है? Plica semilunaris is a fold of conjunctiva and this fold of conjunctiva is present on the medial side of your eye. ठीक है, not laterally, near the medial angle of the eye, and medial to this plica circularis, you have a red color conical elevation which you can appreciate in front of your mirror. If you will see this on the medial side, that red color conical projection is known as lacrimal caruncle. So in this beautiful eye, you can appreciate this is the nose area. So this is the medial side. Now here you can appreciate these both things. Now here this portion is your plica circularis. This is a small fold of the conjunctiva which you can appreciate in your eye also, and medial to this you are able to see this small projection
which is conical in shape and this is known as lacrimal caruncle. Clear? So यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, ठीक है. अब ये lacrimal caruncle क्या होता है? Now this lacrimal caruncle contains the sweat and sebaceous gland and ये जो secretions हैं sweat and sebaceous glands के, ये स्टीयर के साथ मिलके क्या बनाते हैं? फिल्म बनाते हैं in front of our external surface of eyeball. ठीक है. Then the lacrimal fluid, अभी हमने देखा कि lacrimal fluid रिलीज हो रहा है lateral side से and it is reaching to the medial side. So medial side में जहां पे इस एरिया में हमारा lacrimal fluid आके collect हो जाता है. Now in this part where the lacrimal fluid comes and remain here is known as lacrimal lake. ये एक लेक वाला एरिया है. इस लेक में क्या भरा हुआ है? This lake is for the collection of lacrimal fluid and this lake is known as lacus lacrimalis. And then from the this lake of the lacrimal system, it is drained by the lacrimal canaliculi. So canaliculi are the canals which are very fine and these canals are associated with your upper and lower eyelid. So there are two canals, one is for upper eyelid, one is for the lower eyelid, and the canals opening into your eyelids are known as puncta. What is that? Puncta. So lacrimal puncta is the opening through which the fluid enters into these lacrimal canaliculi. ठीक है. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे on this medial part you are able to appreciate कि on this point you have very small fine foramen and that is known as lacrimal puncta. And these lacrimal punctas are related with upper and lower eyelid. From the lacrimal puncta, we have the canalicules, those are going towards the nasolacrimal sac. And here in this part, you have the sac that is known as lacrimal sac. ठीक है? So जब आप इस part को देखें, तो you should able to appreciate the small openings here, which are known as the puncta, and from the puncta you have the canaliculi. These canaliculi will open into this lacrimal sac. Clear? Now again in this diagram you can see that this is your canalicules. These canaliculi will open here and these openings are known as puncta. Now this area is the plica circularis. This is plica circularis. Medial to plica circularis you have the lacrimal caruncle. These canaliculi will open into this pouch and this pouch is known as lacrimal sac. Clear? Now here again you can appreciate that this is your upper part of the gland, that is the orbital part. This is the lower part of the gland. This is the palpebral part, and the duct of this part will first enter here and from here it will ultimately reach. So if I will cut this area, I have cut actually the all ducts. Clear? Now what is lacrimal sac? Lacrimal sac is the upper blind or closed end of the nasolacrimal duct. Clear? And what is the length of this sac? Sometimes you have the question, it is around 12 mm long and it lies behind the medial palpebral ligament. Now dear students, you have to go back in my class of the facial expression. उस facial expression की class में we have seen the muscle and that muscle is present around the orbit is known as Orbicularis Oculi. Now in that Orbicularis Oculi we have seen that there are two part of the fibers. One is the circular fibers, those are along the margin of orbit. So वो जो orbit के margin पे fibers होते हैं वो यहाँ पे हमने देखा था एक ligament that is medial palpebral ligament. उस medial palpebral ligament से arise होते हैं और इस तरह से ring form में arranged होते हैं. Clear? So ये जो आपका lacrimal sac है, ये lacrimal sac इस medial palpebral ligament के पीछे होता है. This is the question multiple choice that which structure lies anterior to the lacrimal sac? Answer is medial palpebral ligament. Finally, the sac is drained downward into the nasolacrimal duct and nasolacrimal duct ultimately open into the nasal cavity. Now, the lacrimal sac lies in the lacrimal groove. It is not fossa, it is groove. Fossa कहाँ है? Fossa यहाँ है. And this fossa is for, the fossa is for lacrimal gland. So, fossa कहाँ होता है? यहाँ होता है. ठीक है? और ये क्या है? This is lacrimal groove. It is not fossa. Please keep this thing in mind. So this is the fossa, fossa is for gland and groove is for the sac. Now this lacrimal groove is bounded
dipped in front by the anterior lacrimal crest of maxilla and posteriorly by the lacrimal crest of lacrimal bone. ठीक है, सो ये आपके लिए क्वेश्चन है. जब आप ड्राई स्कल देखेंगे, इन दैट ड्राई स्कल यू कैन अप्रिशिएट हियर दैट देयर आर टू बोन्स. यहां पे ये क्या है? दिस इज योर मैक्सिला. नाउ दिस मैक्सिला इज गोइंग इनटू द योर medial side of the orbit and it will make a suture here with the frontal part, frontal bone. Now ये जो portion है maxilla का, this part is having a small projection here. This is known as anterior lacrimal crest and this anterior lacrimal crest lies just in front of this sac. और इस sac को जब आप remove करोगे तो you will find that this bone which is present here is actually the lacrimal bone. ठीक है, और इस लैक्राइमल बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट. ठीक है, सो यहां पे जो बेसिक क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंटीरियर टू दिस सैक is medial palpebral ligament and what are the bones? So bones which are forming the lacrimal groove is your maxilla. Mainly कौन सी bone है? Maxilla and lacrimal bone. Now this lacrimal sac is covered by the lacrimal fascia. Now what is lacrimal fascia? It is nothing but it is a periosteum. ठीक है, it is the orbital periosteum and this orbital periosteum covers the lacrimal sac. So ये जो हमारा lacrimal sac है, इस lacrimal sac के चारों ओर you will have the covering and that covering is known as your lacrimal fascia. ठीक है, now the lacrimal sac I told you crossed in front by the medial palpebral ligament, plus this is the important thing that it is also having connection with the deeper fibers of Orbicularis Oculi. So that we discussed in the class of muscles of facial expression. When the palpebral and lacrimal part of the Orbicularis Oculi contract, the contraction of these part will turn the lid inside. Not only there is a closing of your lids, but there is a turning of the lids inward. Which part? Medial part. ठीक है, and I told you that medially you have the opening and this opening is known as lacrimal puncta. तो जब आप आई क्लोज कर रहे हैं तो आई क्लोज के टाइम आपकी जो आईलिड्स हैं इनका इनवर्ड टर्निंग हो रही है and that inward turning is responsible for this puncta to dip inside the lake of lacrimal area. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आई है. ठीक है, ये हमारा मीडियल एंगल है. सपोज दिस इज द नोज. सो यहां पे आपके पास दो ओपनिंग है. दिस इज द पंक्टाज. ठीक है, अब क्या होगा जब आपने आई क्लोज किया, सो एट द क्लोजिंग ऑफ द आई अगर ये पंक्टा इनवर्ड टर्न नहीं हुए तो ये फ्लूइड में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो फ्लूइड इन डक्ट्स के थ्रू, दैट इज कैनालिक्यूल के थ्रू आपका सैक में नहीं जाएगा. सो लैक्राइमल सैक में फ्लूइड के पहुंचने के लिए इन पंक्टा को लैक्राइमल फ्लूइड में डिप होना पड़ेगा. दैट मीन्स इनवर्ड टर्निंग होनी पड़ेगी एंड दैट इनवर्ड टर्निंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल. साइमल्टेनियसली क्या होगा कि द सैक इज ड्रॉन वाइडली ओपन. तो जो अभी हमने पढ़ा कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इज नॉट ओनली क्लोजिंग द लिड, नॉट ओनली inward turning of the punctas towards the lake of the lacrimal fluid, but the third thing is happening here is that it causes widening of the lacrimal sac, and because of the widening of the lacrimal sac there is a vacuum create inside and that will suck the your fluid through the canaliculi. So जो वैक्यूम क्रिएट होता है, दैट वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द लैक्राइमल सैक बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन of the fibers of Orbicularis Oculi. Those will dilate this sac and create the suction inside the sac. The inflammation of lacrimal sac is known as dacrocystitis. This is the question of your viva. Then what is nasolacrimal duct? Now nasolacrimal duct is 2 centimeter or 18 mm long duct. Now the question is, most common question is about its direction. It is downward, backward, laterally. DBL. This is the most favorite question in multiple choice. What is the direction of nasolacrimal duct? No doubt it will go downward, but
not only the downward, it will go backward and laterally. It is not coming forward, it is going backward and it runs along the lateral wall, that's why it is laterally. So what is the direction? Downward, backward and laterally in a bony canal, and it opens anteriorly in the inferior meatus. What is meatus? We will discuss in the lateral wall of nasal cavity. Because it is running along the lateral wall, so it opens into the lateral wall of nasal cavity. The mucous membrane of this nasolacrimal duct shows some valve, and these valves prevent basically the reverse flow of the air through this nasolacrimal duct into your eyes. Clear? The duct and sac are lined by the ciliated columnar epithelium. Now, in this diagram, you can see what do you mean by the inferior meatus. So, when you will see the lateral wall of the nose, you are having the bony projections. These bony projections are known as concas, and below the concha you have a gap. ठीक है, so this is the dry specimen. You are able to see the bones. अगर इन bones के ऊपर आप mucosa लगा दें, that is the normal finding. So mucosa अगर इसके ऊपर bone के ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे इस bony projection और इस mucosal area के नीचे आपको एक gap नजर आ रहा है. This gap is known as inferior meatus. This is middle meatus. This is superior meatus. So what is meatus? Meatus is nothing but these are the space below the bony projections in the lateral nasal wall. और इस lateral nasal wall में ये जो inferior area है, इस inferior area में anterior part में you have the opening, and this opening is opening of nasolacrimal duct. Clear? Now from here the fluid will go posteriorly and you are able to taste the eye drop. Now what is lacrimal drainage pathway? So lacrimal drainage pathway overall क्या हुआ? ठीक है, so lacrimal drainage pathway क्या हुआ? There is a constant production of the tear which is actually from the lacrimal gland, and the production is matched by the elimination. ठीक है, so जितना production हो रहा है that is also eliminating simultaneously. So you don't have any kind of overflow. Now some tears are lost by the evaporation. कुछ जो टीयर हैं वो इवोपरेट हो जाते हैं, और सम आर एब्जॉर्ब अक्रॉस द कंजक्टिवा. ठीक है, बट द मेजर अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, दैट इज lacrimal fluid, is drained by the nasolacrimal drainage system. Now how it will work? So first thing is that tears collect at the medial angle of the eye, then they will drain into the puncta. Punctas are present along the upper and lower eyelid. From the puncta the tear drain into the canaliculi. From the canaliculi, you will have the lacrimal sac. So ultimately, fluid will enter into the lacrimal sac. And the canalicules are one for each eyelid, which are 10 mm long. And the canaliculi first passes vertically and then it turns medially. So if you will see this diagram, so these canaliculi first go vertically and then turn medially. After that, both the canaliculi join to form a common canal, and ultimately this will open into this lacrimal sac. But I just told you that this fluid which is present here will enter into the canaliculi through these puncta only when there is a inward turning of your eyelid. So inward turning of eyelid से क्या होगा? This puncta will now dip inside the lake of lacrimal fluid. So the canaliculi almost unite, form a common canaliculi, and ultimately it will drain into the lacrimal sac. Now what are the factors? The factors which are responsible for the drainage is capillary action. Second, I told you the blinking action of the eye which is produced by Orbicularis Oculi. Second and the third and most important, inward turning of the lacrimal puncta into the this lacus lacrimalis by the blinking action. And the fourth and important thing is that when we are doing the contraction of Orbicularis Oculi, there is a aspiration of the fluid in the lacrimal sac, but how? By the creation of vacuum into the sac, and this vacuum is created by the contraction of Orbicularis Oculi muscle, which is having the fibers insertion into the lacrimal sac. Clear? Now this is the very important question for your exam. How the lacrimal secretion produced? देखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी secretion को प्रोड्यूस करेंगे, हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में किसकी बात करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ secretions, and this parasympathetic supply is known as secretomotor pathway. ठीक है,
So what is the another name of secretomotor pathway? Parasympathetic supply. Now here you can see that this is the first we'll discuss that ये जो parasympathetic supply है, now this parasympathetic supply is reaching to the lacrimal gland from the facial nerve. ठीक है, कहां से आती है ये? It comes from the facial nerve. So the secretomotor fibers arises from the lacrimatory nucleus which is present in the brain stem. ठीक है, सबसे पहले lacrimatory nucleus है जो ब्रेन स्टेम में है, then it travels in the nervous intermedius. Now nervous intermedius is nothing but it is a part of the facial nerve and ultimately it will join the facial nerve to form the trunk of facial nerve. Now the geniculate ganglia which is a part of the facial nerve give rise to a nerve is known as greater petrosal nerve. Now this greater petrosal nerve join to form nerve to pterygoid canal with the deep petrosal nerve. Now this nerve to pterygoid canal will reach into the pterygopalatine fossa and the parasympathetic fibers will relay into this ganglia. Now the postganglionic fibers from the ganglia will pass through the zygomatic branch and zygomatic branch will give one more branch is known as zygomaticotemporal nerve, and from the zygomaticotemporal nerve ultimately the fiber will reach to the lacrimal nerve and lacrimal nerve supply the lacrimal gland. ठीक है, तो ये इसको याद कैसे रखना है, ये व्हाट इट इज एक्चुअली मीनिंग. सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पहले आप एक बोनी फ्रेमवर्क को समझें. नाउ बोनी फ्रेमवर्क क्या है कि हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है यहां पे. लैक्राइमल ग्लैंड की नर्व सप्लाई क्या है? इफ समबडी विल आस्क यू, आंसर इज लैक्राइमल नर्व. व्हाट इज दैट? लैक्राइमल नर्व. अब ये जो लैक्राइमल नर्व है, ये लैक्राइमल नर्व जाइगोमेटिक नर्व की ब्रांच नहीं है. Lacrimal nerve is reaching here from the ophthalmic nerve. So lacrimal nerve तो यहां पे आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो lacrimal nerve है, इस lacrimal nerve में parasympathetic fibers नहीं होते हैं. Lacrimal nerve initially does not have the parasympathetic fibers. ये जो parasympathetic fibers हैं जो अभी हमने पढ़े, ये यहां पे कैसे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं इस pterygoid canal के थ्रू. So pterygoid canal के थ्रू fibers पहुंचते हैं और ये फाइबर्स यहां पे रिले हो गए. यहां पे रिले होने के बाद यू हैव द जाइगोमेटिक नर्व विच इज ए ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व. ठीक है, और मैक्सिलरी नर्व के थ्रू ये फाइबर्स जाइगोमेटिक नर्व की जो ब्रांच है उसके थ्रू जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू यू हैव ए एनास्टोमोसिस. ये जो एनास्टोमोसिस है नर्व्स के बीच में, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो यहां से आ रहे हैं दे आर reaching here and then they will enter into the lacrimal gland. ठीक है, तो हमें पहली चीज तो ये समझ में आई कि lacrimal nerve के अंदर parasympathetic fiber कैसे आते हैं. So they are reaching here through this pterygopalatine ganglia. ठीक है, so यहाँ पे ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे थे वो यहाँ रिले हुए और इन न्यूरॉन्स के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज हुए दे विल पास थ्रू द जाइगोमेटिक नर्व एंड इट्स ब्रांच इज जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व एंड दिस जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व विल सेंड द फाइबर्स टू द लैक्राइमल नर्व एंड देन अल्टीमेटली टू द लैक्राइमल ग्लैंड. ठीक है, सो लैक्राइमल नर्व के अंदर फाइबर नहीं आ रहे हैं, लैक्राइमल नर्व में ये फाइबर यहां से एंटर हो रहे हैं and lacrimal nerve will ultimately supplying this lacrimal gland. ठीक है, अब इसका जो प्री गैंग्लियोनिक पाथवे है वो भी हम समझें. सो प्री गैंग्लियोनिक पाथवे समझने के लिए यहां पे आप ये चीज देखिए कि हमें एक चीज है, एक नर्व है जिसका नाम ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. देखिए, जब भी आप किसी भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की बात करेंगे बॉडी में, हम जब भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की बात करेंगे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे दैट इज नोन एज गैंग्लिया. इस गैंग्लिया में जो फाइबर आ रहे हैं फ्रॉम द ब्रेन स्टेम दे आर नोन एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और इस गैंग्लिया से जो फाइबर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे दे आर नोन एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. नाउ हियर इट इज द लैक्राइमल ग्लैंड. नाउ इस गैंग्लिया के अंदर हो क्या रहा है कि जो फाइबर प्री गैंग्लियोनिक पाथवे से आ रहे हैं दे विल रिलीज हियर and there is a formation of anastomosis. Now the second set of the fibers arising from these neurons and they are ultimately supplying the target gland. ठीक है, तो यहां पे आपके पास दो सेट्स ऑफ फाइबर्स हैं. ये जो सेट्स ऑफ फाइबर हैं इन न्यूरॉन्स का लोकेशन क्या है? ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं ब्रेन स्टेम में
और ये ब्रेन स्टेम से न्यूरॉन पहुंचा गैंग्लिया में, और ये वाला पार्ट कहलाया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। यहां गैंग्लिया में ये रिले हुए और यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स या सेकंड सेट ऑफ न्यूरॉन्स अराइज हुए और उनके फाइबर सीधा आपके लैक्राइमल ग्लैंड में पहुंचे। ये वाला पार्ट अभी मैंने आपको समझाया कि यहां से जो गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया का नाम है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। सो दिस इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। इस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया में ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आके रिले हो गए और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाइगोमेटिक नर्व के थ्रू जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच में गए और वहां से लैक्राइमल नर्व से होते हुए लैक्राइमल ग्लैंड तक चले गए। लेकिन जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो ब्रेन स्टेम से इस गैंग्लिया में कैसे पहुंचते हैं? द आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व एंड इट्स ब्रांच। आंसर इज बाय द फेशियल नर्व एंड इट्स ब्रांच। सो क्रेनियल नर्व 7 or the facial nerve is carrying the preganglionic parasympathetic fiber for the lacrimal gland. Now the preganglionic parasympathetic fibers, first they will arise from the nuclei which is present in the brain stem, is known as lacrimatory nucleus. Now from the lacrimatory nucleus the facial nerve will form. This facial nerve will give it small dilatation. That dilatation is known as geniculate ganglia. Now this is not the parasympathetic ganglia. Please keep this thing in mind. Parasympathetic ganglia is pterygopalatine ganglia. It is just the dilatation of the nerve for other sensation that we will discuss later on. Now from this, the fibers those are coming for the parasympathetic supply will pass, and this branch is known as greater petrosal nerve. Now this greater petrosal nerve has to reach to this pterygopalatine ganglia. So ये जो greater petrosal nerve है, ये greater petrosal nerve यहाँ पे एक और nerve के साथ join हो रही है। ये जो nerve है जो मैंने अभी black कलर से ड्रॉ की, ये nerve कहलाई deep petrosal nerve, और ये जो green कलर की nerve है ये कहलाई greater petrosal nerve। ये जो deep petrosal nerve है, it is actually the sympathetic supply। जो ये आपका कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसके चारों ओर एक प्लक्सेस है। दिस प्लक्सेस इज फॉर्मिंग द सिंपैथेटिक प्लक्सेस, एंड ये सिंपैथेटिक प्लक्सेस एक नर्व को बनाता है। दिस नर्व इज डीप पेट्रोजल नर्व एंड दिस ग्रीन कलर नर्व इज ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। सो अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व में कौन से फाइबर है? आंसर इज प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। और डीप पेट्रोजल नर्व में कौन से फाइबर हैं? सिंपैथेटिक फाइबर। लेकिन ये सिंपैथेटिक फाइबर कहां से आ रहे हैं? इस गैंग्लिया से आ रहे हैं। इस गैंग्लिया का नाम है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक चेन, और यहां पे जो फाइबर हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं। ठीक है, तो डीप पेट्रोजल नर्व में क्या होते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व में क्या होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ठीक है, ये दोनों नर्व यहां पे एक कॉमन कैनाल के थ्रू पास होती हैं। ये कॉमन कैनाल कहलाती है आपकी कैनाल फॉर वीडियन नर्व और नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल। दिस इज ऑल्सो नोन एज वीडियन नर्व। सो वीडियन नर्व फॉर्म बाय टू नर्व्स, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व and deep petrosal nerve. And what is deep petrosal nerve? These are the sympathetic fiber. What is greater petrosal nerve? These are parasympathetic fiber. And ये fibers ultimately पहुंचे कहां? हमारे इस गैंग्लिया में। इस गैंग्लिया में sympathetic fibers को भूल जाइए, parasympathetic fibers रिले हो जाते हैं, और रिले होने के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक अराइज होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। इसी के बेस पे हमारा लैक्राइमल रिफ्लेक्स काम करता है। लैक्राइमल रिफ्लेक्स के दो पार्ट हैं, एफरेंट लिम्ब एंड इफरेंट लिम्ब। एफरेंट लिम्ब मतलब कौन सी नर्व्स हैं जो हमारे आई से सेंसेशन लेके जाती हैं। तो जब भी आंख में इरिटेशन होती है, व्हेन यू विल रब द आई, देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड बिकॉज द एफरेंट लिम्ब, that is the sensory nerves, those are carrying the sensation, are actually by the ophthalmic nerve, and additionally from the lower eyelid by the infraorbital nerve. ठीक है, so ये जो आपकी आई है, इस आई से सेंसेशन दो नर्व लेके जा रही हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व एंड इंफ्राऑर्बिटल नर्व। ये जो दोनों नर्व्स हैं, द इंपल्स विल रीच टू द ब्रेन
ब्रेन में इंटर न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स पे जाके ये सेंसेशन रिले करेंगे एंड वहां से ये सेंसेशन पहुंचेंगे सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस से, प्लस सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। वहां से जो इफरेंट आएंगे, दोज इफरेंट विल सप्लाई योर लैक्राइमल ग्लैंड एंड द इफरेंट विल कम थ्रू द योर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। दैट मीन्स फेशियल नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, deep petrosal nerve will join from the nerve to pterygoid canal and they will ultimately relay into the your pterygopalatine ganglia, and from that you have the fibers that is from zygomatic nerve and your lacrimal gland. Clear? So जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ें, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में दो चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले उस पूरे फ्लो चार्ट में आपको एक गैंग्लिया पकड़ना है। यहां पे गैंग्लिया कौन सा है? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। उस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया और न्यूक्लियस तक का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाया? प्री गैंग्लियोनिक। और उस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया से लैक्राइमल ग्लैंड तक का कनेक्शन क्या कहलाया? पोस्ट गैंग्लियोनिक। मतलब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आके यहां रिले हो जाते हैं और यहां साइनेप्स करने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो बाहर निकले वो पोस्ट गैंग्लियोनिक कहलाए। ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर्स कभी भी इस पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में रिले नहीं होंगे, वो आएंगे और उस गैंग्लिया के थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएंगे। दे विल नॉट रिले और नॉट मेक एनी साइनेप्स विद द न्यूरॉन ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। ठीक है, और ये जो फाइबर्स हैं जो ब्रेन स्टेम से आ रहे हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, देन द फाइबर्स विल जॉइन द ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व फिर एक ब्रांच देती है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व टू टेरिगोइड कैनाल से होती हुई आपके इस टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया में पहुंचती है। और नर्व टू टेरिगोइड कैनाल में साथ में एक और एडिशनल नर्व एंटर हो रही है, दैट इज द डीप पेट्रोजल नर्व। ठीक है, और डीप पेट्रोजल नर्व और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया नर्व टू टेरिगोइड कैनाल और वीडियन नर्व। ठीक है, so this is what you should able to understand in this lacrimal reflex. So whenever you are writing or reading the lacrimal apparatus, आप सबसे पहले ये देखें कि lacrimal apparatus का function क्या है, what are the components of lacrimal apparatus, lacrimal apparatus का जो drainage system है वो काम कैसे करता है, what is the secretomotor pathway of lacrimal gland, that means how the parasympathetic supply reaches to the lacrimal gland. So this is all for today's class. Thank you.